Good morning class. Today we'll start a chapter number 2 that is related to a geography portion, and today's topic is globe time. For this topic we have to revise the previous topic again, that is what do you mean by globe, latitude and longitude. So let's start today's topic. First, latitude. Latitude is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree at poles. As you can see in this diagram, here is 0 degree and 0 degree is also known as equator. 0 degree वो imaginary line है जो कि अर्थ को 2 equal parts में divide करती है, and those 2 equal parts are upper part is known as northern hemisphere, southern part is known as southern hemisphere. Now lines of constant latitude or parallels run east to west as circles parallel to the equator. And what are the directions of latitude? The directions of latitudes are east to west. Now let's see again this diagram. Here is the diagram of imaginary earth. Equator, north pole, south pole. North, in the northern direction there is north pole, and in the southern direction there is south pole. There are 90 latitudes in the northern hemisphere, 90 latitudes in the southern hemisphere, and there are total 180 latitudes. Now come towards longitude. Longitude, the lines of longitude extends from pole to pole. As you can see in that diagram, in the longitude the directions are from poles to poles, north pole to south pole. Let's move forward to the next diagram. Characteristics of latitude. First point, latitudes are also known as parallels as they are circles parallel to the equator. Latitudes, सभी latitudes एक समान दूरी पर होते हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल है. पैरेलल मतलब जब दो लाइन एक दूसरे के बराबर होती हैं उन्हें पैरेलल बोला जाता है. तो सभी लैटिट्यूड्स एक दूसरे को कट नहीं करते हैं, तो इस वजह से सारे के सारे लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल्स हैं. There are 180 latitudes are on the earth. In the previous slide we have discussed about this. Total 180 latitudes earth पर हैं. Third point, they are at equidistance from each other. The distance between two parallels is approximately 111 किलोमीटर. ये सभी एक दूसरे पर बराबर दूरी पर स्थित हैं and इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर है. Next point, all parallels except poles are complete circle. Okay, so the latitudes start from east direction or west direction and completes a circle. So that's why all parallels, that means 0 degree, 10 degree north or 10 degree south, all completes a circle. Next point, their circumference decreases gradually from the equator to poles where they are simply points, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. सबसे बड़ा एक अगर हम बोले लैटिट्यूड है तो वो 0 डिग्री है. कम टू द प्रीवियस स्लाइड. 0 डिग्री सबसे बड़ा लैटिट्यूड है. 0 डिग्री मीन्स इक्वेटर. और वहीं बात करें हम उसकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर जाकर धीरे धीरे जब लैटिट्यूड ऊपर जाते हैं तो सर्कमफ्रेंस कम होता जाता है, उनका जो एरिया है वो कम होता जाता है. एंड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर वो ओनली एक पॉइंट के रूप में दर्शाए जाते हैं. लास्ट, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पैरेलल लैटिट्यूड डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्गिट्यूड. All meridians are half circles because they join the north pole and south pole. They are of equal length. So in the previous slide we have discussed about longitude. Longitudes की direction north pole to south pole होती है और हर एक longitude एक half circle है. पूरे ये एक circle है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होता है, तो ये एक half circle को form करता है. Now there are how many latitudes on the earth? There are 180 latitudes on the earth. Now if we discuss about longitudes, there are 360 longitudes on earth. 0 degree prime meridian, 180 degree east direction, 180 degree in the west direction. Now third point, the distance between the lines of longitude decreases from 111 kilometer at the equator towards the pole where the distance is 0, as well as meridians meet here. Now on the equator
यहाँ पर डिस्टेंस 111 किलोमीटर होती है और पोल्स तक जाते जाते इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। यहाँ पर ग्रेजुअली कम होती जाएगी, इनकी 111 किलोमीटर है, यहाँ उससे कम, यहाँ कम, और यहाँ नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर जाते जाते ओनली वो मीट करते हैं एक पॉइंट के तौर पर। सो सबसे ज़्यादा दूरी यहाँ पर, उसके सबसे कम यहाँ पर होगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, मेरिडियंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर लाइक लैटिट्यूड्स। In the previous slide we have discussed about the latitudes that each and every latitude except North Pole and South Pole are parallel to each other, but अगर हम longitude की बात करते हैं तो longitude एक दूसरे के parallel नहीं होते हैं। They meridians are equidistant to each other। यहाँ पर वो भले ही एक दूरी पर होंगे पर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होते हैं। Now next slide, here are the some major or main longitude or latitudes. First, 0 degree is also known as equator. Next is 23 degree half minute is also known as Tropic of Cancer. उसी के ठीक नीचे हम 23 degree half minute की बात करें तो यहाँ पर है Tropic of Cancer and here is Tropic of Capricorn. And again we'll move forward to the northern hemisphere, Arctic Circle, as you all know as, here is Arctic Ocean. That's why Arctic Circle 66.5 degree, and in the southern hemisphere Antarctic Circle, Antarctica, that's why. So again revise, 0 degree divides the earth into two equal parts, northern hemisphere, southern hemisphere. Two poles, north pole, south pole, 90 degree north, 90 degree south. Important major lines, latitude 0 degree, equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn. अपोजिट डायरेक्शन में है ये, ऊपर Tropic of Cancer in the northern hemisphere and Tropic of Capricorn in the southern hemisphere. In the northern hemisphere Arctic Circle and in the southern hemisphere Antarctic Circle.